Good afternoon, bhai. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so we'll just finish off the various levels detail में, and then we'll start with ISM. So security levels basically आपको कल बताया था कि अलग अलग security level maintain होता है. What are these security levels? These are MASIC levels, and the general points here that your identity of people coming on board or wanting to come on board should be checked. Your designated areas to be established with license with PFSO and PFSO, that is Port Facility Security Officer. You have to segregate checked persons from unchecked persons for the ease of operation, segregate embarkation and disembarkation of people, identify access points to secure against unauthorized access, and securing of areas that provide access to personnel, provide security briefings to all ship's personnel on possible threats and levels, and compliance with ship security plan at all times. Now, what is level 1? कई बार आता है क्वेश्चन बड़ा, सी 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो 2 लाइन 3 लाइन लिख के खत्म करो, वो तो बात अलग है. बट इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 10 marks or 25 marks, then you have to give full detail like what I'm doing now. So level 1 में that is operating on daily basis and that is maintained by minimum security 24/7. So all coming on board to be searched, frequency should be as per an SSP. Searches to be carried out in coordination with port facility and not to violate human rights. So the minimum security is to be maintained in port and on board. Ship and port operations to be carried out as per ship and port facility security plan. Port facility ensures to keep no access areas under surveillance. Ship and port authority mutually supervise loading and unloading operations of cargo and stores, and minimum access and ship to be maintained at all times. MASIC level 2, that is when your level of security is heightened, and then you have additional measures to be conducted. So at this level, your SSP should establish the measures to be applied to protect against heightened risk. Your vigilance should be higher, control to be tighter, and additional personnel should be there for patrolling the access areas. Waterside access to be deterred. Establish a restricted area on the shore side of the ship. Increasing the search frequency and detail of persons due to board or disembark. Escorting all visitors on board. Additional security briefings to ship's personnel to emphasize in relation to security level and carry out full or partial search. Then comes MASIC level 3. You will have additional security measures for any incident which is coming, which is there, and that will be only for limited time frame. And the security measures must be attended to, although there might not be specific target. SSP should be adhered to, and licensing to be done with port facility. You should have highest degree of vigilance in that you're limiting your access to single controlled access points. आजकल भी कोरोना के चक्कर में हमारी कॉलोनी में भी सिंगल कंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट हो गया. सब गाड़ियां एक जगह से ही निकलती हैं और एक जगह से ही आती हैं. तो उसी तरह MASIC लेवल 3 में भी वही हो रहा है, एक ही कंट्रोल पॉइंट से हो रहा है. Granting access to authorized person or those responding to security incident. Suspension of embarkation and disembarkation अगर security ज़्यादा tighten है. Suspension of cargo operations and store. And अगर डर ज़्यादा है तो evacuation of ship. Close monitoring of movements of the people on board. Preparing for full or partial search of ship. अब आता है restricted area क्या क्या है. So restricted areas आपके navigation bridge, machinery space, spaces with security related equipment, ventilation spaces, spaces containing IMDG cargo, accommodation, other areas specified in the SSP. MASIC level 1 में locking and securing access points हो जाएगा. In
surveillance equipment to monitor areas, using that, thorough patrolling, using alarm system to alert ship's personnel in case of unwanted entry. In 2 will be establishing restricted area in vicinity of access points, continuously monitoring surveillance equipment, additional persons for patrolling said areas. MOSIC level 3 will be set up of restricted areas near the access points at the highest level of stringency, searching for restricted areas as part of ship search. Then for cargo handling, MOSIC level 1 will be routine checks on cargo transport unit and cargo spaces, matching your cargo with your documentation, loading vehicles subject to search basis on your RoRo vessels, and checking seals to prevent tampering of containers. In 2 will be checking of cargo transport unit cargo spaces, intense checks of intended cargo to be loaded, intense checking of loading vehicles, increased frequency of checking seals. In 3 will be suspension of loading or discharging, verify dangerous goods and hazardous substance on board. Then for your stores, level 1 will be matching orders with documents prior to loading, storing the stores securely. In 2 will be checking prior to loading stores, identifying inspections. Level 3 will be only in emergency you'll take stores, otherwise you'll suspend it. Now handling of unaccompanied baggage on passenger ships. MOSIC level 1 will be baggage screening and searching, which may include X-ray. In 2 will be full screening, including X-ray for all baggage. In 3 will be suspension of baggage handling and refusal to accept any unaccompanied baggage. So your intrusion detection devices should be there on board, which are capable of setting off alarm. Your area should be illuminated in darkness as well as vicinity of ship. Then you can have security of ship and port complementary to each other, and SSO and PFSO communication cooperation to be essential. So that is your details of ISPS security levels. So if you have a detailed question coming up, you have to write basis that. Now we'll start with ISM. Earlier we used to have a lot of accidents. Recently, if you know, one of the vessels, the Express, which Express has sunk near Sri Lanka after burning for 13 days, was carrying 1 container of nitric acid. And despite of ISM, people make mistakes. That caught fire, and now it has sunk with 300 tons of heavy oil. So again, the nitric acid was spilled overboard, and that affected your marine species. So reason for this accident was human error. So that's why you have ISM coming up in ships. So the safety management system in compliance with ISM code is being placed for all passenger ship, tankers and bulk carriers and other vessels of 500 gross tonnage and above. And that was from 1st July 2002. And the details of ship system will be found in the SMS manual. So the purpose of ISM was to provide international standard for safe management and operation of ships and to prevent pollution. So this is mandatory for all ships of 500 gross tonnage and above.
as per chapter 9 of SOLAS. So this is a code. Code is a guideline, but because it entered in SOLAS, it has become mandatory. So the objectives of ISM is to ensure safety of all at sea, prevention of human injury or loss of life, prevention of damage to environment, that is your marine environment. And the objectives, therefore, again, will be safe practices in ship operation, establishing safeguards against identified risks. Safeguards means कि अगर आपके रिस्क आइडेंटिफाई हो गए तो आप उससे कैसे बचोगे. Continuously improve safety management skill of personnel ashore and on boarding. पर ये नहीं कि सिर्फ शिप के लोगों की सेफ्टी मैनेजमेंट का स्किल बढ़ाएं, but also for people on in your office. So that should be preparing for emergencies or contingency plan for both safety and environmental protection. So SMS क्या है? What is SMS? So SMS क्या है? It's an organized system planned and implemented by shipping company to ensure that safety of ship and marine environment is carried out. So it's a very important aspect of ISM because it will give you the policies, practice and procedures so that you have safe functioning of the ships. तो तीसरी चीज कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है किस आइटम्स वो चाहिए जिससे वो फंक्शन करे. एसएमएस को चलाने के लिए क्या चाहिए? So that is functional requirements. First thing is procedure and guidelines to act in emergency situation. कई बार इमरजेंसी आती है, आप घबरा जाते हो, वो पता नहीं करना क्या है. तो जब तक आपके प्रोसीजर और गाइडलाइन नहीं है, you cannot think correctly. Number 2 is your safety and environmental protection policy होनी चाहिए. ये नहीं कि उस टाइम अगर कोई इमरजेंसी आए अब उस टाइम सोचना शुरू करो अब क्या करें. तो पहले से ही कंटीजेंसी प्लान बन गया है तो बेटर रहता है. Number 3 is procedure and guidelines for reporting accidents and other non-conformity. Non-conformity का मतलब है कि when you are not conforming to the code, जो आपको कोड दी गई है उससे आप उसको कंफर्म नहीं कर रहे. और एक्सीडेंट का मतलब है अगर एक्सीडेंट हुआ या नियर मिस हुआ उसको कैसे रिपोर्ट करोगे so that फ्यूचर में इंसिडेंट ना हो. Number 4 is clear levels of authority and communication between ship crew members, shore and shipboard personnel. अब लोग जहाज पे रहते हैं तो ईगो लेके बैठते हैं कि भाई मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसको क्यों बोलूं, वो सोचता वो क्यों बोले. तो in this, if you start having ego issues, then the things will go worse. इसीलिए they have already given clear level of authority in SMS. Number 5. Procedure and guidelines to ensure safe operation of ships, protection of marine environment as per flag and international legislations. Number 6, कि आप internal audit कैसे करोगे. अब internal audit क्या होता है कि आपके कंपनी के लोग ही दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आपके डिपार्टमेंट का ऑडिट करते हैं. एक्सटर्नल ऑडिट होता है जब सर्वेयर आता है and he does an audit, that is external audit. Internal audit is when you yourself do it for a different department. जैसे इंजन वाले डेक का करें और डेक वाले इंजन का करें. That is internal audit. And then the vessel details. तो एसएमएस में आपका वेसल मैनेजमेंट आएगा, रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, वेसल रिपेयर एंड मेंटेनेंस पीएमएस में आएगा, ऑडिट एंड रिव्यू आएगा, सेफ्टी इंस्पेक्शन आएगा, वेसल कंडीशन सर्वे आएगा, शिप रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है. सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन एसएमएस. So it is a structured documented system under ISM which enables shipping companies and crew to implement your safety policy regarding your ship, crew and environment while at sea. अब इसमें एक important part आता है document of compliance. Document of compliance क्या होता है कि ये इशू किया जाता है शिप टाइप को. शिप टाइप का मतलब है आप टैंकर में काम कर रहे हो, टैंकर डिवीजन हो, उसके लिए अलग शिप टाइप हो गया, उसके लिए डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस शोर के नाम पे इशू होगा, शिप को नहीं होगा. सिमिलरली अगर आपका बल्क कैरियर डिवीजन है सिंगापुर में तो उसको अलग से डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस दिया जाएगा.
तो ये शोर को दिया जाता है, मतलब कंपनी को दिया जाता है, उसके ऑफिस को दिया जाता है, शिप को नहीं। तो हो सकता है कि एक शिप टाइप में 5 जहाज हो और आपके ऑफिस के नीचे 5 जहाज हैं, मतलब वो बल्क कैरियर डिवीजन में 5 जहाज हैं। तो पांचों जहाज को डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस, सपोज बल्क कैरियर का है, तो उसकी कॉपी पांचों जहाज में रहेगी। लेकिन इंडिविजुअल शिप्स के लिए जो इंस्पेक्शन होगा वो एसएमसी का होगा, उसको मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो इंडिविजुअल शिप्स विल हैव एसएमसी सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस एक्सपायर हो गया तो सारे पांचों के पांचों जहाज विल बी स्टक, उनके एसएमसी कैंसिल हो जाएंगे और दे कैन नॉट कंटिन्यू विद इट। अब इसको एक बार दिखाता हूँ आपका, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ था इसके ऊपर। अब जैसे ये है, एक कंपनी है XYZ, इसमें एक डिवीजन है सिंगापुर का, एक डिवीजन है हांगकांग का, एक मनीला का है, एक जापान में इमाबारी का। तो इसका ऑफिस जो सिंगापुर का है उसमें टैंकर है, वो 3 टैंकर। इसमें गैस कैरियर हांगकांग में है 2 गैस कैरियर। मनीला में कंटेनर डिवीजन है, उसमें 4 जहाज है। इमाबारी जापान में जनरल कार्गो का डिवीजन है, इसमें 4 जहाज है। तो सिंगापुर का जो ऑफिस है उसको डॉक इशू किया जाएगा बेसिस टैंकर, और इंडिविजुअल शिप्स में यही कॉपी सबके पास रहेगी। लेकिन हर एक जहाज को सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा आफ्टर इंस्पेक्शन, और वो ओरिजिनल इनके पास होगा, कॉपी होगी कंपनी की। लेकिन अगर डॉक एक्सपायर हो गया तो ये तीनों के तीनों जहाज अरेस्ट हो जाएंगे, दे कैन नॉट सेल अनलेस दिस इज रेक्टिफाइड। बाकी जहाज चालू रहेंगे। एसएमसी अगर एक्सपायर हो गया तो बाकी जहाज चालू रहेंगे, कंपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। बट अगर डॉक एक्सपायर हो गया तो तीनों के तीनों जहाज अरेस्टेड हो गए, बाकी जहाज को असर नहीं पड़ेगा। इसको क्लियर हुआ कि नहीं? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये क्लियर है? सर एक बार फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग उल्टा लिख देते हो। डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस आप लिख देते हो गिवन टू शिप, तो फिर 0 हो जाता है सीधा। इट इज गिवन टू शिप टाइप, नॉट शिप। एसएमसी इज गिवन टू शिप, डॉक इज गिवन टू शिप टाइप। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझने में आसान होगा, याद करने में आसान हो जाएगा। ओके सर। सर इसको एक बार ये समझा किताबों दीजिए। में। बट एसएमसी हाँ तो बोलो। सभी का सब जहाज का होगा ना सर, एसएमसी? एसएमसी हर एक जहाज का अपना होगा। यस सर। एसएमसी हर एक जहाज का अपना रहेगा। एसएमसी एक्सपायर हो गया तो वही जहाज अरेस्टेड होगा। डॉक एक्सपायर हो गया तो उस शिप टाइप में जितने जहाज हैं वो फंस जाएंगे। जैसे अगर मनीला का डॉक एक्सपायर हो गया तो इसके नीचे जो 4 कंटेनर वेसल है वो फंस जाएंगे, दे कांट सेल, जब तक ये रिन्यू नहीं होता। एसएमसी यस सर। इनके चारों के कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के चलेंगे। ठीक है, बाकी शिप टाइप के चलेंगे। ये नहीं कि सारे लोग फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसके नीचे जो 4 जहाज है वो फंसेंगे, बाकी चलेंगे। ठीक है।
So document of compliance is certificate issued to the shipping company which complies with requirements of ISM. So most important document of shipping company which is often checked during port control survey. SMC जो है, that is issued to company which is signifying that the company and the person operating are in, the SMS is in order on the ship, and PSC can check your SMC. अब जब हमारे सर्वेज होते हैं तो उसमें नॉन कंफर्मिटी होता है, कई चीजें आती हैं इसमें, ऑब्जर्वेशन होता है, तो क्या क्या चीजें, उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है. जैसे हमारे को प्रूफ हो जाता है कि भाई ये काम गलत हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब एक प्रूफ हो गया कि ये काम गलत हुआ है. जैसे कोर्ट को चाहिए होता है ना प्रूफ कि कुछ क्राइम हुआ है, तो उसी तरह ऑब्जेक्टिव एविडेंस या तो फोटोग्राफ हो गई या कुछ रिकॉर्ड हो गए जिससे पता लग जाए कि वो गलत काम एक्चुअली हुआ है. So it is based on observation, measurements, test which is made during audit and which can be verified. Non-conformity and major non-conformity अब क्या होता है? So जब आपके पास एविडेंस है कि your non-fulfillment of specific requirement of SMS और ISM, तो उसमें non-conformity हो जाता है. अगर आप ISM कोड को नहीं फॉलो कर रहे हो, मेन रिक्वायरमेंट्स को, और आपके पास एविडेंस है कि आप नहीं कर रहे हो, तो नॉन कंफर्मिटी हो जाता है. मेजर नॉन कंफर्मिटी क्या होता है? मेजर नॉन कंफर्मिटी होता है व्हेन पोजेस सीरियस थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ पर्सनल, शिप एंड एनवायरनमेंट and indicates major lapse in effective system implementation of ISM. And so major non-conformity will be requiring immediate corrective action to be taken by ships management. जैसे ऑयल वाटर सेपरेटर काम नहीं कर रहा, तो वो तो मेजर नॉन कंफर्मिटी हो गया. इसका मतलब विलेजेस आप पंप आउट ही नहीं कर सकते, ऑयल वाटर सेपरेटर नहीं काम कर रहा, तो वो तो आप सेल ही नहीं कर सकते, आपको ठीक कराना पड़ेगा. सो दैट इज मेजर नॉन कंफर्मिटी. एनिवर्सरी डेट आता है कि जब आपका एक्सपायर हो रहा है डॉक्यूमेंट, तो उसको होता है एनिवर्सरी डेट. ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि स्टेटमेंट ऑडिट के टाइम में कि आप छोटी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज के बारे में आपके पास डिटेल है और उसके बारे में ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, तो ऑब्जर्वेशन आप सर्टिफिकेट के ऊपर लिख सकते हो. तो आता है डीपीए कौन है? So DPA is a designated person ashore who is required to effective implementation of company's SMS. He is based on ashore for developing, implementing safety culture within company. His role and responsibility is to verify, monitor and control safety, pollution prevention activities in operation of the ship. So he is a conduit. Conduit का मतलब है एक linkage है between company and the specific ship as per SMS. He is an independent individual with direct access to highest level of management. He will verify and check SMS is functioning properly. तो ये सब उसकी रोल ऑफ डीपीए है. अब ISM के 13 चैप्टर हैं, उनको क्लॉज कहते हैं. कंटेंट्स ऑफ ISM में 13 चैप्टर हैं. पहला चैप्टर है जनरल ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ISM. नंबर 2 इज सेफ्टी, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड SMS. नंबर 3 इज कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 4 इज DPA के बारे में. 5th इज मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी. 6th इज रिसोर्सेज एंड पर्सनल. रिसोर्सेज का मतलब है सामान या पैसा, पर्सनल का मतलब है चार. ये DPA अरेंज करेगा फॉर द शिप. 7 is development of shipboard operational plans. 8 is contingency plans. ये emergency preparedness के लिए you require contingency plans. 9 is report and analysis of your non-conformity, accidents and hazardous occurrence. 10 is maintenance of ship equipment. 11 is the documentation. 12th is your company verification, review and evaluation. 13 is certification, verification and control of documentation.
तो ऑब्जेक्टिव्स हमने ऑलरेडी कर दिया है, ये फिर से एक बार बता देते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स में हो गया सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, establish safeguard against possible risk, continuously improve management skill of people on board and ashore. मास्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन ISM? पहला, he will implement the safety and environmental protection policy of the company. Number two, he will motivate the crew for observation of this policy. Three is he will issue orders, जो master order and instruction जो होंगे वो clear and simple manner में होंगे. He'll verify the specified requirements of ISM are observed. He'll review the SMS and report deficiency to DPL. But master can override ISM provided he thinks that it is interfering with the safety and pollution prevention of the ship. So the company should establish an SMA. The master has overriding authority and responsibility to make decisions with respect to safety and pollution prevention and request company's assistance. So ये आपका document of compliance, इसको enlarge करके दिखाता हूँ. You see there that's issued to the company office in Malaysia. तो मलेशिया के ऑफिस के लिए दिया है, कंपनी आईडी नंबर दिया है, शिप आईडी नंबर नहीं दिया, कंपनी आईडी नंबर दिया. लिखा हुआ है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ कंपनी हैज बीन ऑडिटेड एंड कंप्लाइज विद रिक्वायरमेंट ऑफ ISM फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ शिप एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन, एंड इट इज फॉर कार्गो शिप. शिप टाइप है कार्गो शिप या जनरल कार्गो शिप. इसकी वैलिडिटी 5 years. ठीक है. So this is your document of compliance. अब ये इशू किया जाता है कंपनी को once you have audit of the shore side of SMS. नंबर 2 के एविडेंस चाहिए कि आपका सिस्टम जो है वो एटलीस्ट एक शिप टाइप पे 3 महीने तक चल रहा है. So it is working for 3 months in one ship type, company's fleet. Number 3 is it is for the ship type, not for the whole types of ship, only one ship type. Validity is 5 years, subject to annual verification, issued by flag state, and it can be withdrawn upon flag state's request, or if there is a major non-conformity with ISM, then इसको withdraw किया जाएगा. और जब इसको withdraw करेंगे, all associated safety management certificate or interim SMC will be withdrawn if doc is withdrawn. Copy of doc should be placed on board, original which will be with the company. Interim document of compliance का मतलब temporary document of compliance क्या है? तो जब आपने लिया इसको तो it will not exceed 12 months. अब कब इशू किया जाता है? फर्स्ट, आपने नई कंपनी ली, आपने नई कंपनी में ली तो आपको सीधा डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस नहीं मिलेगा, इंटरिम डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस मिलेगा, नॉट एक्सीडिंग 12 months. फ्रॉम देयर यू हैव टू अप्लाई फॉर एक्चुअल डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस, क्योंकि आपके पास तीन महीना कम से कम वर्किंग SMS होना चाहिए. नंबर 2, न्यू शिप टाइप्स एडेड टू एग्जिस्टिंग डॉक. सपोज आपने टैंकर डिवीजन का ऑलरेडी डॉक है, लेकिन अब आपके पास कंटेनर डिवीजन चालू हो रहा है, तो कंटेनर डिवीजन चालू हुआ तो इमीडिएटली डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस नहीं मिलेगा, इंटरिम डॉक मिलेगा, और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर एक्चुअल डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस. आता है SMC. So SMC is issued to the ship type, not ship type, to the ship. इंडिविजुअल शिप को दिया जाएगा, इसमें नेम ऑफ शिप दिया जाएगा, लेटर्स दिए हुए हैं, डिस्टिंक्टिव, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, टाइप ऑफ शिप, ग्रॉस टनेज, IMO नंबर सब दिया हुआ है, कंपनी का नाम सब तो आएगा, एड्रेस आएगा, और इसमें लिखा जाएगा दैट द SMS ऑफ द शिप हैज बीन ऑडिटेड. कंपनी नहीं लिखा, शिप लिखा. इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISM and the SMC is valid for 5 years subject to periodically verification, and the validity of doc is there.
तो अगर ये डॉक नहीं वैलिड होगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा। SMC क्या है? SMC is issued to every ship during audit. There's evidence that SMS being working for at least 3 months prior to audit. Validity is of doc is mandatory, valid for 5 years. Interim SMC आप ले सकते हो for 6 months plus 6 months at the request. So total हो गया 12 महीने। अब कब इशू करते हैं interim SMC? If you are taken a new ship on delivery, interim SMC लेंगे। Suppose the company takes over responsibility of another company which is new to the company, तब आप SMC के लिए अप्लाई करोगे, interim SMC के लिए। या अगर आपका ship changes flag, then again you will go for interim SMC and then final SMC. Now ISM is linked with OPA 90, Oil Pollution Act 90 of US, for company which is trading with US waters or ships which are trading with US waters. और इसके लिए वेसल रिस्पांस प्लान आता है जिसको हम ओपा 90 में बताएंगे। ओपा 90 जब करेंगे तब बताएंगे। जरा वीडियो इसका दिखाते हैं आपको ISM का।